we have looked into three different approaches for sequence alignment. First one was, आप बताएं? Yes, of course, that was visual dot plots. Second one, आप बोलें? Yes, okay, dynamic programming. And the third one was K-tuple or word based approach. K-tuple और वर्ड बेस्ड अप्रोच के दो कॉमन मैकेनिज्म्स हैं, वन इज फास्टा एंड द अदर वन इज ब्लास्ट. जो अब मॉड्यूल है इसमें हम फास्टा से रेलिवेंट देखेंगे कि फास्टा क्या है और उसका स्कोरिंग मैकेनिज्म क्या होता है. इनिशियली बेसिक आइडिया बिहाइंड ब्लास्ट फास्टा इज यूजर डिफाइंस अ वैल्यू के टू यूज एज द वर्ड लेंथ विथ विच टू सर्व डीबी. यानी कि हमारे पास करेक्टर्स के कम्बिनेशन को लेते हुए हम एक वर्ड की लेंथ बताएंगे और उसके अगेंस्ट डीबी को सर्च किया जाएगा. अब यहाँ पे अगेन दो चीज़ें होंगी हमारे पास. नंबर वन, लेंथ ऑफ वर्ड्स. द अदर वन इज सम सिमिलरिटी मैयर सच एज ब्लॉसम मैट्रिक्स, पाम मैट्रिक्स और एनी अदर सिमिलरिटी डिस्टेंस मैयर. अब होगा क्या कि हमारे पास एक क्यूरी मैयर है और एक हमारे पास डेटाबेस है. क्यूरी को लिया जाएगा और पेयर वाइज इसकी मैचिंग की जाएगी अगेंस्ट डेटाबेस, और फिर जब वो मैच हो जाएगा तो फिर उसको अलाइन करने की कोशिश की जाएगी. सम ऑफ द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फास्टा आर प्रोटीन सीक्वेंसेस, कि ये प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए काम करता है, डीएनए सीक्वेंसेस के लिए काम करता है. अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट फिर टर्म्स हैं और नेम्स हैं कि ये किन केसेस में हमारे पास डीएनए के लिए कर रहा है और किन केसेस में प्रोटीन्स के लिए. इवन इट कैन वर्क फॉर ट्रांसलेटेड प्रोटीन्स ऑल्सो. ट्रांसलेटेड प्रोटीन्स आर वेयर डीएनए हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन स्ट्रक्चर. और हम क्या करते हैं कि बेसिकली डीएनए क्यूरी देंगे और ये सर्च करेगा कि उस डीएनए के अगेंस्ट कौन कौन सी प्रोटीन्स जनरेट हो सकती हैं, और वो डीबी में स्टोर अगर हैं तो उनसे अगेन रिजल्ट रिट्रीव करके लाएगा. और फाइनली हम ये देखते हैं कि इसकी इवेल्यूएशन कैसे है, कि जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट है, यानी कि जो ये रिजल्ट लेकर आ रहा है वो कितना स्टैटिस्टिकली राइट है. बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं फास्टा की. जो फास्टा बेसिकली वर्ड है, इट इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फास्ट एंड ऑल. जो एल्गोरिथम है दैट इज फास्ट. ऑल मीन्स दैट इट विल वर्क फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस विच इज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर. In comparison to this, there is FastP which works for proteins and FastN which works for nucleotides. Similarly, we have SS search which works for nucleotide sequences which are converted into proteins. Moving on, what is our major focus while we are using FASTA? So major focus is that the biologist want to see that if we have some sequence which was query and then it has been searched from database. So this searching or alignment is by chance, or is there something common in their ancestor also? If it is common via ancestor, then it is homologous, they are similar. Otherwise it was only a chance and it might not be much useful. Again, basic concept that we define k-tuple words. K-tuple means number of characters which are joined together, or and then we try to search out from databases. So what are different steps? As we have seen in dot plots also, that if there are two matches between query and database, what will happen? Those matches will appear on diagonal line, as written here also, that whenever there is some matches, that would be on diagonal line of the bar chart. Then what are different steps? So what we do, we need some scoring metrics which would be used for scoring. Once we are trying to align our query sequence against a database, we want to rescore that result, and that would be partial alignment, and we will say that it is our initialization 1 score. Once this score is got, then what we do, we will join those scores with gap penalties, and what would be the output? It would be basically unoptimized result that would be reported as init n score. And finally we reach to final score that would be called opt score, and that is optimized score. How we will get that score? We will be using some dynamic programming technique to join those different results which we get on previous steps. So what are insights? So it is a common thing that if we increase size of tuple, like k value is a bit higher, then there is a good chance that we will get good values which are more accurate. But hits will be very low. For example, if we give a value a, c, t, g and so on, like 11 characters, then there is a less chance that retrieved results will be similar to this information. But on the other hand, if we put very low value of k,
then there would be much noise there. There will be many results, but there would be noise, and we have to reduce that noise also. So we have to find out some optimal value of k to use for k-tuple mechanism. So of course there are limitations. Why there are limitations? Because it is searching for only syntax based things. In syntax means that it is unknown, the meaning of the characters or words is unknown to the searching mechanism. Just we are taking combination of words or characters and we are trying to search from the database. For example, here I have shown two examples, and this example is for proteins also. So first two proteins as shown in this figure, they are similar in meaning, but when we try to search it through FASTA, they will retrieve different meanings and they will not say that it is a same sequence. Similarly, this example is shown for nucleic acids, that when we give this nucleic acid, they will not show the same results.